हेलो पिलामाने वेलकम टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जी पिलामाने तुम स्क्रीन ले तुमने देखिपे जे कौन ना आज आम वीडियो डिस्कसन करवा जे कौन तुम जो +3 रे क्यों ऑनर्स रखिले तुम शीघ्र चाकरी कर बा क्यों ऑनर्स रे कौन टाइप चाकरी बा कौन टाइप जॉब एवेलेबल सब अच्छी कैरियर ऑप्शन सब कौन कौन अच्छी कौन डिफरेंट डिफरेंट ऑनर्स रे तो मैंने प्रायतः वर्तमान समय ग्रेजुएशन रे कौन करूँ ना डिफरेंट डिफरेंट कौन रखुव ना ऑनर्स पेपर रखुव डिफरेंट डिफरेंट तुम मेजर वर्तमान समय एनईपी जेहेतु हो गला एनईपी हिसाब से कौन होना जोटा है ऑनर्स से कौन ना तुम मेजर है तो सही मेजर कौन रहिले बा तुमर ऑनर्स कौन रखिले तुम मानकर कौन है ना डिफरेंट डिफरेंट चाकरी करि केउँ केउँ चाकरी कर शीघ्र चाकरी कर से विषय कौन करवा आम पूरा फुल वीडियो डिस्कसन करवा वीडियो भल होता है नहीं तो लाइक कर शेयर कर तुम सब सांग मान सहित कौन कर ना शेयर कर दियो तुम जूनियर सीनियर समस्त शेयर कर दियो जहाँफल कौन हो ना से पाखे भी यही इनफर्मेशन टी पहुँच जाऊ तो ठीक है चलते कौन करवा वीडियो को स्टार्ट करवा देखिपे पिलाने तुम स्क्रीन लेटा अच्छी जे कौन देख कौन कौन सब जॉब एवेलेबल अच्छी कौन डिफरेंट डिफरेंट ऑनर्स सब्जेक्ट देख यपटर अच्छी देख ऑनर्स तुम सब जो +3 बा ग्रेजुएशन जो सब ऑनर्स तुम मैंने कौन अच्छी ना रखीच आउटर है कौन ना तुम कौन कौन कैरियर ऑप्शन जॉब अच्छी आउ तार है कौन ना एग्जांपल कौ सब जॉब तुम मैंने कर देख तुम जब कॉमर्स तुम +3 रखीच तुम जब ग्रेजुएशन में तुम कॉमर्स रखीच ताले कौन कर ना तुम हो पार फ्यूचर जॉब कौन कौन अच्छी ना अकाउंटेंट ऑडिटर टैक्स कंसल्टेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट बैंकिंग ऑफिसर हो पार चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए जोटा हो पार सीएमए आउ सीएस ये सब जिन कौन हो पार ना तुम फ्यूचर हो पार यही सब जॉब तुम मानी कौन है कॉमर्स स्टूडेंट मानी यहाँ एवेलेबल अच्छी तो कौ क्षेत्र में बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट मैंने जाती देख कैरियर ऑप्शन तुम फाइनेंस अकाउंटिंग बैंकिंग बिजनेस यही सब क्षेत्र में कॉमर्स पिला बहुत भल कौन अच्छी ना ऑप्शन बा जॉब रही बुझ तापर जब फिजिक्स छुआ मान फिजिक्स छुआ मान कौन कौन तांकर कैरियर ऑप्शन अच्छी देख तांकर बढ़िया ऑप्शन अच्छी कौटी ना रिसर्च क्षेत्र में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में डिफेन्स क्षेत्र में एनालिटिक्स क्षेत्र में बुझ तो ता क्षेत्र में तुम जॉब कौन कौन अच्छी देख जॉब जो देखा तो रिसर्च जो साइंटिस्ट हो पारे कौ मैंने जो मैंने फिजिक्स ऑनर्स रखिए से रिसर्च साइंटिस्ट हो पारे से मैंने तुम लेक्चरर हो पारे +2 लेक्चरर हो +3 लेक्चरर हो से हो पारे सहित डाटा एनालिस्ट हो पारे तापर डिफेन्स जो क्षेत्र में जो रिसर्च हो रिसर्च क्षेत्र से कौन करेंगे ना जॉइन करेंगे तापर जो अच्छी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो जो आम अच्छी जो स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया अच्छी से कौन करेंगे तापर टेक्निकल ऑफिसर भी से कौन हो पारे ना आराम से हो पारे कौ मैंने जो मैंने फिजिक्स रे कौन करते ना से ग्रेजुएशन बा से कौन करते ना +3 जदि करेंगे तापर जी बटानी क्षेत्र में देख बटानी क्षेत्र में जीवा तो से कौन करेंगे ना एग्रीकल्चर रिसर्च और एनवायरनमेंट क्षेत्र में से बहुत कैरियर ऑप्शन अच्छी कौन कौन से बटनिस्ट हो पारे है तापर देख जोटा बटनिकल साइंटिस्ट जो मैंने कहुए बटनिस्ट ता देख फॉरेस्ट ऑफिसर हो पारे एग्रीकल्चर ऑफिसर हो पारे प्लांट रिसर्चर हो पारे एनवायरनमेंटल कंसल्टेंट हो पारे बुझ कथा कह तो एतिकी कैरियर ऑप्शन रोचे कौन ना बटनी मानकर आहरी भी तुम डिफरेंट डिफरेंट देख रोचे तुम जो तुम पीएचडी रिसर्च कर सब जिन भी अच्छी बुझ कथा तुम जब अंतर कौन सेक्टर को जावाई चाहूँ तो आराम से जापर कितु मुझे कौन कहूँ कौन ना स्पेसिफिकाली यही सब्जेक्ट गुड़ाक कौन कौन अच्छी जो गुड़ाक कौन ना से सब सब्जेक्ट गुड़ाक छुआ मैंने बहुत माहिर था बुझ तुम चाहिए भी तुम कौन कर ना तुम बैंकिंग एग्जाम भी देपर डिफरेंट डिफरेंट छुआ मैंने बैंकिंग एग्जाम देपर कितु कौ मान इजी हम ना कॉमर्स और इकोनॉमिक्स छुआ मान इजी हम तो यहीटा कथा जे तुम कौन हो तुम स्पेसिफिकाली जो सब्जेक्ट वाइज बा तुम ऑनर्स वाइज कौन कौन अच्छी ना स्पेसिफिकाली तुम अच्छी कौन जॉब अच्छी से कौन कर डिस्कसन कर देख जूलॉजी जदि देख जूलॉजी क्षेत्र में देखा कौटी कैरियर ऑप्शन अच्छी ना वाइल्ड लाइफ रिसर्च फिशरीज और एनवायरनमेंट क्षेत्र में अच्छी कौन कैरियर ऑप्शन अच्छी वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हो पारे जूलॉजिस्ट हो पारे फिशरीज ऑफिसर हो पारे एनिमल रिसर्चर हो पारे आउ लैब टेक्नीशियन हो पारे कौ मैंने ना जो मैंने जूलॉजी पढ़े तापर देख नेक्स्ट जे कौन है से देख एम देख लेक्चरर भी हो पारे भाव जी कौन ना जूलॉजी मैंने पढ़ते लेक्चर हो पारे कि बटनी मैंने पढ़ते लेक्चर हो पारे लेक्चर भी हो पारे लेक्चर देख सब जिनस लेक्चरर जोड़ीदेव सब जिनस टीचर जोड़ीदेव है टीचर लेक्चरर सब जिनस हो पार तुम मैंने बुझ बास
তুমি কম করছ না যদি পিজি করুছ তাহলে লেকচর হয়েপার তুমি যদি নেট ক্লিয়ার করছ লেকচর হয়েপার বা তুমি যদি কম করছ না যে ডিফারেন্ট যে লেকচরর এক্সাম গুড়া তাকে যদি ক্লিয়ার করে তাহলে লেকচর হয়েপার আসিস্টান্ট প্রফেসর হওয়া চাହୁছ তো তোমার কম করবে আসিস্টান্ট প্রফেসর এক্সাম দেওয়া পড়ব সেসব হলে তুমি করে তো এসব জিনিস সমস্ত এভেলেবল অছি টিচিং জব সবু সবু ডিপার্টমেন্ট পাই বা সবু অনর্স পাই টিচিং জব এভেলেবল অছি বুঝছ এটা হল କ'ଣ ନା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଯେଉଁଟା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଯିବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଯିବା ଦେଖ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ମାନେ ସେମାନେ ଟିଚିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆଉ କଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଟିଚର ଲେକ୍ଚରର ହେଇପାରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ହେଇପାରିବେ ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ହେଇପାରିବେ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଯଦି ବେଶୀ ଟିକେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ ଆର୍କିଓଲୋଜିରେ ହେଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆର୍କିଓଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବି ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ ଟିଚର ଲେକ୍ଚରର ବି ହେଇପାରିବେ ମନେକର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବଟନୀ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଟିଚର ଲେକ୍ଚରର ବି ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ ତାପରେ ଯିବା ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଟିଚିଂ ମିଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିସିଂ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମମାନେ ଯେ ଟିଚର ଲେକ୍ଚରର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଇଟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବି ଏମାନେ ହେଇପାରିବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର ତାପରେ ପବ୍ଲିସିଂ ଏଡ଼ିଟର ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ତୁମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବି ହେଉ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହେଲା ଦରକାର ନା ତୁମର ଦରକାର କ'ଣ ଏଡ଼ିଟର ଦରକାର ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ହେଇପାରିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇପାରିବ ତୁମମାନେ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଡିକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଡିକ୍ସନାରୀ ଯେଉଁ ସେଇ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇପାରିବ ତୁମମାନେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନର୍ସ ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଅଛି ଭଲସେ ତାପରେ ଦେଖ ଇଂଲିଶଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଖ ଟିଚିଂ ରାଇଟିଂ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ବି କ'ଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ବି ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖ ଟିଚର ଲେକ୍ଚର ହେଇପାରିବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଇଟର ହେଇପାରିବେ ଏଡ଼ିଟର ହେଇପାରିବେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ କପି ରାଇଟର ହେଇପାରିବେ ପିଆର୍ ଅଫିସର ହେଇପାରିବେ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍କୁ ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି ବା ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ତାପରେ ଯାଅ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ଯିବା ଦେଖ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଦେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଆଉ ଲ ମିଡ଼ିଆ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଟା ବେଶୀ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଅଛି ଭାବିବନି ଯେ କ'ଣ ଏଠି ଥିଲେ କ'ଣ ଟିଚର ହେଇପାରିବନି ଟିଚର ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଟିଚର ମୁଁ କହିସାରିଛି ନା ଟିଚର ଲେକ୍ଚର ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରିବ ସବୁ କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ ତୁମେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଅଦର ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ହେଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଏଠି ଦେଖ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଇପାରିବ ଓପିଏସ୍ସି ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଓପିଏସ୍ସି ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ ଲେକ୍ଚରର ହେଇପାରିବ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ପବ୍ଲିକ୍ ପଲିସି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇପାରିବ ଏନ୍ଜିଓ ଅଫିସର ହେଇପାରିବ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଯେଉଁ ଏଠି ଲ ପଢ଼ିକି ହେଲା ଲ ପଢ଼ିକି ତୁମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଲିଗାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇପାରିବ ହେଲା ଲୟର ହେଇପାରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ହେଲା କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯଦି ଯିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଫିସର ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିସିଆନ୍ ହେଇପାରିବେ RBI ଗ୍ରେଡ୍ B ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚର ହେଇପାରିବେ ତ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ ଅପସନ୍ସ ରହିଛି ମନେ ରଖିବ ଏତିକି ସବୁ ଜବ୍ ଭାବନି ଯେ ଏତିକି ସବୁ ଓନ୍ଲି ଏତିକି ଜବ୍ କହିପାରିବେ ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ତୁମର ଏଇଠି ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ମା ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେମାନେ କେମିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫିସର ହେଇପାରିବେ ଯେଉଁ QC ଓ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ତାପରେ ହେଲା ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଇପାରିବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ଫୁଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ହେଲା ଆଉ ତୁମର ସେମାନେ ହଁ ଏସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବେ ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ ତ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ସହ ସେମାନେ ଲେକ୍ଚରର ହେଇପାରିବେ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ ଅଦର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯେଉଁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କେମିଷ୍ଟ ଜଣେ ହେଇପାରିବନି ତ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ କି କେମିଷ୍ଟ ଜଣେ ଫିଜିକ୍ସ ଛୁଆ ହେଇପାରିବନି କି ବଟନୀ ଛୁଆ ହେଇପାରିବନି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଜବ୍କୁ ସେମାନେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା ତୁମର ଅନର୍ସ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତୁମର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଜବ୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝଛ ନା କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସେଇ ସବୁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ ହେଲା
तापर देख होम साइंस देख तुम कैरियर ऑप्शन रोचे न्यूट्रिशन फूड कम्युनिटी आउ एजुकेशन क्षेत्र में देख कैरियर ऑप्शन रोचे तुम कौन हो पार ना जड़े न्यूट्रिशनिस्ट हो पार डायटिशियन हो पार फूड कंसल्टेंट हो पार चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर हो पार कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर भी तुम हो पार जब कौन है तुम होम साइंस कौन रख तुम ऑनर्स सब्जेक्ट रखुच तापर देख एजुकेशन क्षेत्र में देख टीचिंग ट्रेनिंग एकेडमी क्षेत्र से बहुत बढ़िया सुजोग रोचे एजुकेशन वालांकर जो मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट ने देख स्कूल टीचर हो पार बीएड फैकल्टी हो पार एजुकेशनल कनसल्टर हो पार एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हो पार एजुकेशन ऑफिसर हो पार तो लेक्चरर हो पार तो ये टाइप डिफरेन्ट कौन अच्छी ना एकेडमिक क्षेत्र में आउ टीचिंग क्षेत्र में तुम अच्छी ना जॉब बहुत एवेलेबल अच्छी गोटा ना एजुकेशन क्षेत्र में तापर देखो फिलोसफी क्षेत्र में देखा तो फिलोसफी से मैंने टीचिंग एथिक्स रिसर्च और सिविल सर्विसेस रे से करें ना से जो कैरियर ऑप्शन भल से बिल्ड करें देख से लेक्चरर हो पारे एथिक्स कंसल्टेंट हो पारे सिविल सर्विसेज दे पारे तापर देख कंटेंट राइटर हो पारे रिसर्चर हो पारे सोशल सेक्टर प्रोफेशनल हो पारे तो यह सब जिन कौन हो पारे ना फिलोसफी रखिले से मैंने हो पारे मन ये गोटे मन रखो एथिक्स जो एथिकाल तुम हाँ लिखाई एथिकाल कंसल्टेंट अच्छी तो आराम से सब जिन हो पारे बुझ कथा कह तापर है कौन नेक्स्ट देख तुम मैथमेटिक्स रे देखा जब एनालिटिक्स आईटी बैंकिंग रिसर्च क्षेत्र से कैरियर ऑप्शन अच्छी डाटा साइंटिस्ट हो पार स्टैटिशियन हो पार एक्चुआरी हो पार तार बैंकिंग ऑफिसर हो पार एनालिस्ट हो पार सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ऑफिसर हो पार लेक्चरर भी हो पार तो ये सब जिन कौन अच्छी ना बहुत अच्छी तुम एवेलेबल कोड्रे ना तुम मैथमेटिक्स बुझल तापर देख पाने तुम सोशियोलॉजी जदि ऑनर्स नौच से कौन हो पार ना तुम सोशल वर्क रिसर्च और कम्युनिटी ये क्षेत्र में कौन अच्छी ना तुम अच्छी तुम जो कैरियर ऑप्शन अच्छी देख सोशल वेलफेयर ऑफिसर एनजीओ मैनेजर रिसर्च असिस्टेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर यही सब जिन कौन अच्छी ना तुम सोशियोलॉजी अच्छी सहित भी तुम मैंने कौन कर ना बहुत भल सुजोग अच्छी कौन यूपीएससी ओपीएससी क्षेत्र में यूपीएससी आउ ओपीएससी क्षेत्र में भी अच्छी कौन ना भल सुजोग अच्छी सहित मैंने लेक्चरर तुम हो पार टीचर भी हो पार यह सब जिन कौन अच्छी ना सोशियोलॉजी छुआ मान बहुत एवेलेबल अच्छी तापर देख आंथ्रोपोलॉजी जो मैंने नहीं से कौन हो पार ना से रिसर्च आर्कियोलॉजी आउ ट्राइबल वेलफेयर क्षेत्र में से कौन अच्छी ना कैरियर ऑप्शन बहुत भल अच्छी तो से आंथ्रोपोलॉजिस्ट हो पारे ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर हो पारे रिसर्चर हो पारे आर्कियोलॉजी असिस्टेंट हो पारे यूपीएससी तुम ऑप्शनल जो स्पेशलिस्ट जो अच्छी से सब जिन भी तुमने कौन हो पार ना आराम से हो पार तो यही सब जिन सहित तुमने टीचर लेक्चरर तुम अदर भी एग्जाम सब एवेलेबल जोड़ा अच्छी तुम सब डिफरेन्ट सब्जेक्ट कौन हो पार तुमने देपर तापर देख साइकोलॉजी देख मेंटल हेल्थ एचआर आउ काउंसलिंग यही क्षेत्र में कौन से कैरियर ऑप्शन अच्छी काउंसलर गोटे बहुत भल काउंसलर हो पार कैरियर काउंसलर हो पार गोटे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो पार है तापर एक एचआर एग्जीक्यूटिव हो पार और बिहेवियरल एनालिस्ट भी आराम से हो पार जो मैंने कौन थी ना साइकोलॉजी थी जो मैंने जर्नालिज्म थी से मैंने मीडिया रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन क्षेत्र से बहुत से कौन अच्छी ना अच्छी जॉब जो अवेलेबिलिटी अच्छी से रिपोर्टर हो पारे न्यूज एंकर हो पारे कंटेंट क्रिएटर हो पारे डिजिटल मीडिया एग्जीक्यूटिव हो पारे पीआर ऑफिसर हो पारे एडिटर हो पारे तो बहुत बढ़िया सुजोग अच्छी कौन ना जर्नालिज्म सब्जेक्ट जो मैंने कौन है प्लस थ्री जो मैंने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो ऑनर्स ने कौन ना जर्नालिज्म से है कौन ये टाइप कौन है तुम जो मीडिया कम्युनिकेशन रिलेटेड कौन है समस्त सब किसी जिन तुम मैंने कौन हो ना तुम जो प्रादुर्भाव ये रहा देख नेक्स्ट तुम हिस्ट्री देख रिसर्च आर्चिव्स आउ म्यूजियम्स आउ टीचिंग क्षेत्र से कौन अच्छी ना बहुत तुम अच्छी सुजोग रोचे कौन ना आर्कियोलॉजिस्ट हो पार हिस्टोरियन हो पार तार आर्चिविस्ट हो पार म्यूजियम जो क्यूरेटर हो पार लेक्चरर हो पार सिविल सर्विसेज तुम कौन कर ना आराम से दे पार तो यही टाइप डिफरेन्ट जिन अच्छी जो गुड़ा कौन हम ना तुम आराम से कौन रहा जो डिफरेन्ट जो सुजोग रोचे ना यही सब जिन तुम हिस्ट्री सब्जेक्ट ये टाइप डिफरेन्ट कौन रोना तुम जो कैरियर ऑप्शन रुझल तापर देख आईटी और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र जोड़ा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी कहुए से कौन है ना सॉफ्टवेयर सिस्टम नेटवर्क और सिक्योरिटी क्षेत्र में रोचे कौन ना प्रादुर्भाव रोचे कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपर हो पारे वेब डेवलपर हो पारे साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र से बहुत भल से कौन ना जो फोकस रोक स्कोप रोडाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर
ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ, ଆଇଟି ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରିବେ ବା ଆଇଟିକାଲ ଯେଉଁ ଆଇଟି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଇଟି ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯେଉଁମାନେ ରଖିବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସେମାନେ ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ଲାନିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ସର୍ଭେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ ନା ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ରହିବ ବା ଫୋକସ୍ ଏରିଆ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ସେମାନେ GIS ଆନାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଟ୍ରୋଗ୍ରାଫର ହେଇପାରିବେ, ତାପରେ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନର ହେଇପାରିବେ, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେଇପାରିବେ, ସର୍ଭେ ଅଫିସର ହେଇପାରିବେ ହେଲା। ଯେଉଁ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଜିଓଗ୍ରାଫି ତୁମର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅପସନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମର ବେଶୀ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବେଶୀ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ କ'ଣ ଅଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକାଡେମିକ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ କ୍ୟାରିୟର ଫିଲ୍ଡ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବୁଝିଲ। ଦେଖ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ବେଶୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ନା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସୋସିଓଲୋଜି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ଫିଲୋସଫି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆଉ ବେସିକାଲି ଟିଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ତୁମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଇଟର ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବେଶୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଅଛି ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ବେଶୀ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି ସେଇଟା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା କମର୍ସ, ଆଇଟି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜି ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ବେଶୀ ରହୁଛି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ତୁମ ସୁଯୋଗ ଜବ୍ ସୁଯୋଗ ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି ବେଶୀ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଯିବା ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏକାଡେମିକ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ତୁମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ ହେଇପାରିବ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ଏକାଡେମିକ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଯିବା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ କ୍ୟାରିୟର ଫିଲ୍ଡସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବେଶୀ କ୍ୟାରିୟର ଫିଲ୍ଡସ୍ କେଉଁଠି ଭଲ ଭାବରେ ବେଶୀ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଇକୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କମର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ବେଶୀ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ କ୍ୟାରିୟର ଫିଲ୍ଡସ୍ ରହୁଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ତୁମମାନେ ସେସବୁ ଜବ୍ ପାଇପାରିବ ବା ସେସବୁ ଜବ୍ରେ ତ ହୋଇପାରିବ ନା ତୁମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବି ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ତ ଏତିକି ରହିଲା ତୁମର ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେଲି କ'ଣ ନା ଯେତିକି ସବୁ ବେସିକାଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି ସବୁ କଲେଜ ଥାଏ ସେସବୁ କଲେଜରେ ଏଇସବୁ ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ହେଲା ବେସିକାଲି ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ। ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇସବୁ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଉ ହେଲା ଏଇସବୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମର ଜବ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜବ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଇଥାଇପାରେ ହେଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ବେସିକାଲି ଏଇସବୁ ଜବ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ଏଇସବୁ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତୁମେ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ବା ତୁମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବୁକ୍ସ ବା ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ ବା ତୁମ ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ ବୁଝଛ କଥା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା କ୍ୟାରିୟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି କ'ଣ ହେଲା ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ ନା +3 ବାଛୁଛ ବା +3 ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା କରୁଛ ତୁମେ ଠିକ୍ ଅନର୍ସ ନେଲେ ବା ତୁମେ କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସବଜେକ୍ଟ ନେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବି କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଏତିକି ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନଲେଜ ମିଳିଯାଇଥିବ ୟା ଦ୍ୱାରା। ଧନ୍ୟବାଦ।